जानते हैं मैडम सीतारामन जी, 400 वंदे भारत ट्रेन बढ़ाने के लिए मतलब क्या होता है? 133 ट्रेन हर साल। आपने कहा कि 3 साल में मैं खत्म कर दूंगा 400 वंदे भारत। इसका मतलब 133 ट्रेन सालाना, हर महीना 11 ट्रेन, हर वीक 3 ट्रेन। आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप बताइए, आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। हर हफ्ता 7 ट्रेन, हर हफ्ता 7 ट्रेन बनाने की आपका नहीं है। ये ऑपरेटिंग रेशियो, रेल का ऑपरेटिंग रेशियो सुनिए। द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ द रेलवे was 98.36% in 2029-20 against the target of 95%. The CAG termed this the worst operating ratio in the last 10 years. Mine is CAG. Operating ratio is a measure of efficiency and refers to the expenses for every rupees 100 earned. A higher operating ratio is therefore worse, as it reflects the amount that has to be invested to earn a rupee of revenue. Furthermore, the CAG reasoned that if we account for the expenditure incurred in providing pension payment, then the operating ratio would further increase to 114.35%. ये हमारा हालात है ट्रेन की, जिसके बारे में बाबा यहाँ हो रहे हैं। यहाँ कह जा रहे थे कि एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन की बात, हम एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ किस लिए करते हैं, जरा सुन लीजिए। With the privatization of Air India, the airline market in India has become a duopoly. आज ही मैं सुबह बताया। The Tata Group owns Air India, Vistara, and majority of Air Asia India combined 42% of the market. Indigo owns another 37%. इसलिए ये हमारा चिंता है। This effectively reverses the liberalization policy of the 1990s, which moved the airline market away from a duopoly into a competitive sector. This investment, without consideration of market concentration, will force future government intervention. आपने government intervention नहीं किया? For instance, after killing the competitive telecom sector in India and seeing the rise of duopoly, the government was forced to nationalize Vodafone India to prevent it from shutting down. There are also concerns around valuation. The Air India privatization will only yield about rupees 2700 crore to the government in cash. In terms of debt, the Tata Group will take on only 25% or 15,300 crores. The bulk of the debt, 75% or 46,262 crore will remain with the government. यही हमारा शंका है। ये शंका हम कहाँ बताए, इसलिए मैडम को यहाँ बताने आए हैं। हमें गाली गलौज जितना देना है दे दीजिए, कोई हमें परवाह नहीं। हमें इसलिए परवाह नहीं क्योंकि चुनौतियों से यार कभी डरना नहीं। जीने के पहले तुम्हें मरना नहीं। इस जहां से पाँव तेरे खींचेंगे सभी, पर बड़े जो कदम पीछे करना नहीं। ये हमारा तर्क है। ये हमारा तर्क के साथ मैं ये बजट को पूरा विरोध करते हुए मेरा वाणी को विराम करते हैं। नमस्कार। मान्य सभाध्यक्ष उनका जाएगा रिकॉर्ड में। इनका टाइम मत लीजिए, आप शुरू कीजिए, आपका टाइम चला जाएगा। हाँ, प्लीज शुरू कीजिए। ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ 22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಬಜೆಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿರುವ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಇತರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ನೀಲನಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷ 39,44,999 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಇದು 2021-22ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ 4.6 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಮಾರು 11 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 1,80,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಒದಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 27,000 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿಸಾನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅವರ ಸರಕುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಿಸಾನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಭಾರತವು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಟಿ, ಬಿಪಿಒ ವಲಯದಲ್ಲಿ 152% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ 77%, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 39%, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 22%, ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 68% ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ 42% ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ PMGKY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಜನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ FPF ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 12% ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪಾಲು ಮತ್ತು 12% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಾಲು ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದು 100 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರವರೆಗೆ ವೇತನ ತಿಂಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ 20 ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 15,000 ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ EPFO ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ EPFO ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1.17 ಲಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ 39.59 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ಮಿನಿಟ್ ಉनको एक घंटा देता. ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೃಷ್ಣ, ಪೆನ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿತು. ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲು ಕೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣ, ಪೆನ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನದಿ ತೀರದ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನದಿ ನೀರಿನ ವಿವಾದ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಪಾಲನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಎರಡು. मान्यवर सभापति महोदय, जिस प्रकार
बसंत सौंदर्यीकरण का संदेश लेकर आता है, फूल खिल उठते हैं और आम के वृक्षों की डालियां भी बूर से भर जाती हैं। ठीक उसी तरह से भारत की शक्तिशाली वित्त मंत्री एवं हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट इस देश को दिया है, आज उस बजट की ना केवल भारत बल्कि सारे विश्व के अंदर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से भारत पिछले 7 वर्षों में आज दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। महोदय, आज मुझे याद आ रहा है 2 जुलाई 2015 का वो दिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था। आज जब हम 2022 और 23 के बजट को बारीकी से देखते हैं तो चारों तरफ देखने को मिलता है कि कोई भी सेक्टर हो चाहे उसमें डिजिटलाइजेशन की धूम है। डिजिटलाइजेशन का जो रेवोल्यूशन है वो देश को बहुत आगे बढ़ा रहा है। अभी अधीर रंजन चौधरी जी सामने से आ भी गए हैं, ये बोल रहे थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इन कांग्रेसियों की आदत है, इनके नेताओं की भी, कि ये 2 ट्रक झूठ के लेके चलते हैं और बांटते चले जाते हैं। उसी तरह से आज ये सदन में हमारी सरकार की आलोचना कर रहे थे, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हम नहीं कह रहे हैं, आज विश्व का आम जो है माहौल देखिए, इस कोरोना महामारी के कारण इस दुनिया के अंदर जो सबसे 15 बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, उन सब के नेता की रेटिंग जो है वो घटी है। इवन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी जो रेटिंग है वो घटकर 40% रह गई है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जिन्हें कोविड के समय में महामारी के खिलाफ एक सितारा कहा जाता था, वो भी अपने देश के अंदर इसको संभाल नहीं सकी। आज विश्व के अंदर अगर कोई नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो 70% रेटिंग के साथ सारी दुनिया में इस विश्व का सबसे बड़ा नेता बना हुआ है। और आप बैठिए, इनका टाइम बर्बाद मत कीजिए, बैठिए। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जब हम देखते हैं कि हमारे सिंगापुर का निर्माण जिस ली साहब ने किया है अपने 30 सालों के प्रधानमंत्री काल में, और वर्ल्ड की डेस्टिनेशन सिंगापुर को बनाया है, आज उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की साख को सारी दुनिया के अंदर बढ़ाया है। भारत को मछुआरों का देश कहा जाता था, स्पेरों का देश कहा जाता था, और आज जिस तरह से हमारे देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर उन्नति हो रही है, और बहन सीतारमण जी ने पिछले साल जो बजट इकोनॉमी के 6 पिलर्स के ऊपर आधारित करके इस देश को दिया था, अभी तो तवा भी नहीं गर्म हुआ बहन जी, मैडम जी, सभापति महोदय, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उन्नति के इकोनॉमी के 6 पिलर्स के ऊपर जो पिछला बजट दिखाई दिया था,
आज उसका असर देश के अंदर देखने को मिल रहा है। हमारी कृषि व्यवस्था बहुत बेहतरीन ढंग की है। हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं और इसी तरह से विश्व की हम सबसे बड़ी तेज रफ्तार की इकोनॉमी बने हुए हैं। और आज जो ये बजट समर्थन करने के लिए खड़ा है, 7 इंजन के ऊपर आधारित करके गतिशीलता के लिए जो रखा गया है, ये भी आने वाले समय के अंदर हमारे देश को आगे ले जाएगा। मैं एक अपने हलके की नहीं मैडम जी एक बात अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की कह दूं। मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में सिर्फ एक बात लाना चाहूंगा जल्दी लाइए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2015 में जो है फ्रांस गए थे और वहां पर फ्रांस की सरकार के साथ समझौता किया था कि मेरे लोकसभा में जो अंबाला का रेलवे स्टेशन है उसको वर्ल्ड क्लास का बनाया जाएगा। उसको सिद्धांत तौर के ऊपर मंजूरी मिली भी है और मैं चाहूंगा कि उसके अंदर आगे और काम हो। और अंबाला जो है जी धन्यवाद सभापति मैम, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत मैं मेरा नाम आगे आकर आ जाइए ना, आगे आ जाइए, मैं आगे आ जाइए। धन्यवाद मैम, मैं यहीं बैठता हूं मैम, तो यहीं से क्या हो जाएगा? जी अच्छा प्रणाम है आपको। ठीक, हमने हमें एक कविता याद आ रही है कि मांगा भी न था हमने अभी अपनी दुआओं में, पाया है उससे ज़्यादा मेरे मुल्क ने मोदी की वफाओं में। हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं सभापति मैम, लेकिन हमें एक बात का बड़ा सुकून है कि अमृत काल का बजट है और सही मायने में देश के लोगों को अमृत देने का कार्य हमारी वित्त मंत्री मैम निर्मला सीतारमण जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 60-70 साल की आयु में लोग बीमार होने लगे हैं और वहाँ पहली बार देश में कल्पना हो रही है फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर की। ऑर्गेनिक खेती से कितने लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पहले की किसी सरकार ने नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है कि अपने देश के करोड़ों लोगों को स्वस्थ बनाना है। मैम मुझे बहुत, और मैं एक कलाकार भी हूँ, इसलिए मुझे जो इस बजट में अमृत काल, आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो टूरिज़्म और कल्चर के क्षेत्र में हुआ है, जिसका उदाहरण हमें काशी की भव्यता और विंध्याचल, माँ विंध्याचल का धाम है, बहुत लोग यहाँ से गए होंगे। कभी मैं भी जब माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने 1996 में गया तो पतली पतली गलियों में हमारी पहली बार बड़ी मेहनत से कला के कारण खरीदी गई गाड़ी खरोंच दी गई। आज वो मंदिर कोई देखेगा तो उसको मात्र मंदिर पर नहीं, मात्र अपने प्रसाद योजना पे नहीं, उसको अपने देश की संस्कृति पे गर्व होगा। ऐसा चीज़ इस बजट में किया गया है। मैं कल्चर का जब नाम लेता हूं तो मुझे बताने में बड़ी खुशी होती है कि आज देश के कलाकार कितने खुश हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मात्र फ्लाइट कहीं उतरती है तो वहां पे अनाउंसमेंट नहीं होता कि अपना बेल्ट बांध लें, वहां ये बताया जाता है कि जहां फ्लाइट उतर रही है वहां के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने अपना कैसे योगदान दिया था। आज पहले के लोग क्यों नहीं सोच सकते थे। मैम आज देश के कलाकार आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के कारण अपने भाग्य को सराह रहे हैं कि उनको जितना समय है उससे ज़्यादा उनको काम मिल रहा है। और ये जो बजट है जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो उदीयमान लोगों को मौका दिया गया है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसका एक कितना बड़ा फल मिला है कि काशी में रुद्राक्ष नाम का हॉल बन गया, 2500 लोग एक साथ बैठते हैं, दुनिया का हर कलाकार वहां आकर परफॉर्म करने को खुश हो रहा है। इस बजट में एक और दर्द मैं आपको बता के जो पहले का था अब कैसे उसको दूर किया गया है।
शहर के विकास के ऊपर जो अवधारणा आई है, हम भी किसी दिन अपने गांव से चल के शहर आए थे सभापति मैम, और शहरों में आए थे तो शहर के सरकारों ने हमें गाली दिया था। कभी कह दिया 5 लाख रुपया का इलाज करा के चले जा रहे हो, 5 रुपया का टिकट लेके आए, कभी कह दिया गया बोझ बन गए। आज पहली बार शहर के विकास के रूप में, बस 2 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं बहुत समय नहीं है, बस 2 मिनट, तो उन लोगों के दर्द को भी पहली बार इस बजट में देखा गया। और अमृत योजना को भी धन्यवाद करता हूं, जिसके कारण मैं दिल्ली में अपनी लोकसभा में नाले के गंदे पानी से झील बना चुका हूं। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, मगर कला, पर्यटन और अमृतकाल स्वास्थ्य देने के लिए वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। श्री रामचरण बोहरा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का कुशल नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2022-23 के बजट का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय वित्त मंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस बजट में रेलवे, सड़क, परिवहन का विश्व स्तरीय मॉडल हमारे आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 2022-23 से हो रहा सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, जल परिवहन और जलमार्ग हमारे राष्ट्र की गति को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। 2022-23 में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार होगा। 400 वंदे भारत ट्रेनों, 100 पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। अध्यक्ष माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में जयपुर हीरे जवाहरात का बड़ा केंद्र है। मैं इस क्षेत्र में समस्त व्यापारियों और निवासियों की ओर से माननीय निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस कारोबार में जुड़े हुए व्यापारियों को लाभ देते हुए तरह से हुए पॉलिश किए हुए हीरों का पर एवं रंगीन रत्नों पर आयात शुल्क 7.5% से घटाकर 5% किया है, जबकि बगैर तरह से हुए हीरे जवाहरात आयात शुल्क शून्य किया है। इससे हमारा जवाहरात उद्योग दूसरे देशों की प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। साथ ही कस्टम ड्यूटी को घटाने से 20% निर्यात बढ़ोतरी होगी। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री महोदया का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने सोलर उद्योग को संजीवनी प्रदान की है। महोदय, सोलर पैनल पर 40% और सोलर सेल पर आयात पर 25% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने से स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया विजन को और बल मिलेगा। पीएलआई योजना के अंतर्गत सोलर सेल उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये अब सोलर उत्पादन के विकास हेतु मील का पत्थर साबित होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जो एमएसएमई के क्षेत्र में जिस प्रकार का, मैं 5 मिनट के लिए बोला है, इसके तहत 1,30,00,000 एमएसएमई यूनिट को कर धन अलग से दिलाने के लिए अतिरिक्त उसका लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, राजस्थान की जनता को पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई पानी भी मिले, इसके लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना तत्कालीन राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई थी। इस परियोजना से राजस्थान के 13 जिले को पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा। इस परियोजना की स्वीकृति से जयपुर से बहुत बड़े बांध रामगढ़ को पुनर्जीवन मिलेगा। श्री इसमें संतोष कुमार। मैडम, मेरे क्षेत्र की 2 बात रख के फिर बंद करूंगा। परियोजना को स्वीकृत जयपुर से बहुत बड़े बांध को, रामगढ़ बांध को पुनर्जीवन मिलेगा। उसमें पानी का रिचार्ज भी होगा। इस परियोजना से कि केंद्र द्वारा स्वीकृति दिए जाने से कि पश्चिमी राजस्थान में हरित क्रांति लाने वाली देश की सबसे बड़ी परियोजना साबित होगी। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, माननीय सभापति श्री संतोष कुमार जी बोलिए। सभापति महोदया, बोलिए। मैं आज
केंद्रीय बजट 2022-23 के समर्थन में बोलने के लिए आपके बीच खड़ा हुआ हूँ। आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदया, विश्व में वर्तमान में जो राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं, विशेषकर कोरोना के बाद आज विश्व के अनेकों देश चाइना +1 का विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे उभरते और बदलते अर्थव्यवस्था की स्थिति में भारत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में खड़ा है। भारत को इसका सबसे बड़ा लाभ मिल सकता है और इस बाबत माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की जो उद्घोषणा की है, वही भारत को ये इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका अदा करने के लिए तैयार करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, वह मजबूती के साथ पूरा होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम करने का लक्ष्य रखा है। इस बजट के माध्यम से मोदी जी की सरकार ने विपक्ष को पूरी तरह से क्लीन बोल्ड कर दी है। महोदया, ये रोजगार की बात करते हैं। 14 क्षेत्रों में PLI स्कीम के तहत 60 लाख से नए रोजगार सृजन होने वाले हैं। हम लोगों के लिए हर्ष और गर्व का विषय ही है। यह बजट के माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। कृषि के क्षेत्र में देश में रसायन मुक्त कृषि, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की योजना का प्रावधान किया गया है। 63 करोड़ किसानों को गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा। नाबार्ड इस कृषि एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप के लिए पूंजी के साथ निधि की सुविधा प्रदान करने जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क का निर्माण, जिसमें नीम हैंड्स नोडल केंद्र होगा। यह निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का कार्य करेगा। 2 मिनट। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी को। उन्होंने नवोदित एवं विकासशील बैटरी स्वप्ना पॉलिसी, सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम, 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन, इन सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया है। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का राज्यों का आवंटन सामान्य उधार के अतिरिक्त 25 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण स्वागत योग्य कदम है। मैं अपने राज्य बिहार और अपनी पार्टी की ओर से इसके लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। महोदया, मैं वित्त मंत्री जी से और एक विशेषकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पूरे बजट में जातीय जनगणना को लेकर अलग से कोई प्रावधान या आवंटन नहीं किया गया है। महोदया, कई दशकों से लंबित अति महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मोदी जी ने इस देश के दशकों से लंबित कई विषयों को लेकर लंबी लकीरें खींची है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर का 370 का मसला हो, या पूर्वोत्तर अलगाववाद, एक मिनट अलगाववाद का विषय हो, सभी विषयों का इन अपने कालखंड में सुगम और समाधान निकाला है। मुझे उम्मीद एवं विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही जातीय जनगणना का अति महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। और अंत में मैं अपने क्षेत्र के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी में जो मेरा पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र है, उसको स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाए। और माननीय रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से कई योजनाएं हमारा लंबित है, जो रेलवे की योजनाएं लंबित है। इस देश का सबसे पुराना जिला पूर्णिया है और रेलवे के मानचित्र में कहीं दिख नहीं रहा है। वहाँ से पूर्णिया से कोई सीधी ट्रेन दिल्ली या पटना, बिहार की राजधानी पटना के लिए नहीं है। माननीय मंत्री जी से हम विनती करना चाहते हैं, इसमें प्राथमिकता के आधार पे पूर्णिया से दिल्ली और पटना के लिए ट्रेन की सुविधा करा दे। वंदे भारत जैसी ट्रेन, चाहे तेजस जैसी ट्रेनों की एक सुविधा करा दे। इनके लिए मैं पूर्णिया वासियों की तरफ से माननीय मंत्री जी का आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। श्री राजू बिष्टा जी। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे इस बजट सेशन में बोलने का अनुमति दिया। एक तो हम जैसे युवा सांसद बड़ी उम्मीद लेकर के आते हैं कि सदन में विपक्ष के नेताओं को सुनेंगे और कुछ सीखेंगे। आज बड़ी निराशा हुई और मैं वित्त मंत्री जी से ये भी निवेदन करता हूँ कि अपने जवाब में ज़रा एक बार अच्छे से बजट दोबारा हमारे सब साथियों को बता दें, क्योंकि अधीर जी जो है किसी राशन की दुकान से सारी राशन की लिस्ट ले आए और उसके अलावा उनके बजट में कुछ खास था भी नहीं। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस विजनरी बजट के लिए, क्योंकि समय कम है, लेकिन एक दो विषय जरूर रखना चाहूँगा।
दुनिया भर में ये कोविड के संकट के कारण देश दुनिया आज जिस स्थिति में है उसके बावजूद भी ये हिंदुस्तान ने दिखाया है कि अगर इरादे नेक हो, गरीबों की सेवा करने की इच्छा हो और इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बड़ा सा बड़ा संकट को भी अवसर में बदल करके देश के लिए काम किया जा सकता है। ये हमने इस कोविड संकट के समय में देखा। मैं बाकी नंबर्स की बात नहीं करूंगा मैडम, क्योंकि मैं दार्जिलिंग पहाड़ से आता हूं। कुछ विशेष बातें ऐसी थी जो खास करके नॉर्थ ईस्ट या बॉर्डर के इलाके के लिए बहुत ऐसी योजनाएं थी जो आने वाले समय में उनकी दिशा और दशा को बदल के रख देगी। एक बॉर्डर से लगे हुए जितने भी गांव हैं उनके लिए जो योजना लेकर के आई है भारत सरकार वाइब्रेंट विलेज के नाम से, इससे दार्जिलिंग जैसे और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी क्षेत्र को बहुत लाभ होगा, क्योंकि दार्जिलिंग एकमात्र जिला ऐसा है देश में जहां 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है और पर्वतमाला जो एक नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट के कारण जहां पहुंचा नहीं जा सकता उनके लिए जो रोपवे की व्यवस्था और पोस्ट ऑफिस की सेवा को बैंक की सेवा के रूप में जोड़ने की योजना हो या हर घर जल जैसी योजना हो, ये सब हमारे क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी है। एक दो विषय में जरूर रखना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में रोड की बहुत सारी जो है योजनाएं अभी चल रही है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड हमारे जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र को मिले। अंत में एक ही बात मैं रखना चाहूँगा सर, आज जिस तेज़ी के साथ जो है देश विकास कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेज गति के साथ देश आगे बढ़ रहा है, इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि दार्जिलिंग में ऐसी कोई भी योजनाएं नहीं पहुंचती। उसका मुख्य कारण ये है कि 2005 से अभी तक कोई पंचायत के चुनाव हुए नहीं, कोई इलेक्टेड बॉडी वहाँ पे काम करता नहीं, सांसद और विधायक की पश्चिम बंगाल में चलती नहीं, और पश्चिम बंगाल खुद ही 35 साल जब सीपीएम ने राज किया 2 लाख करोड़ का कर्जा था, पिछले 11 साल में एक कर्जा बढ़ के 6 लाख करोड़ के पार हो गया है और कोई भी योजना नहीं पहुंचती। और जब आज़ादी के समय दार्जिलिंग नंबर 1 पे था, एशिया में सबसे पहली बिजली दार्जिलिंग में आई थी, लेकिन जानबूझ के गलत नीयत और इरादों के कारण दार्जिलिंग आज सीपीएम टीएमसी के कारण पिछड़ा है और 86 के बाद लगातार आंदोलन होते रहे हैं, अलग राज्य की मांग उठती रहती है और हमारी सरकार ने भी, पार्टी ने भी ये कहा है कि हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे, उसके लिए टॉक्स भी चल रहा है। मेरी 2 ही विनती है सर कि स्थायी राजनीतिक समाधान जल्द से जल्द हो, जिससे जो मोदी जी की योजना है उसका लाभ दार्जिलिंग की जनता को मिले और जो गोरखाओं की जो भावना उसके कदर के रूप में उसके हिसाब से स्थायी राजनीतिक समाधान हो। और इसके साथ ही गोरखाओं में 11 जाति ऐसे हैं जो एसटी के लिस्ट से छूटे हुए हैं। 1931 और 1941 के जो लिस्ट है उसके वहाँ तक भी ये एसटी थे, लेकिन उसके बाद से उस लिस्ट से बाहर हो गए। ये बहुत लंबी और पुरानी उनकी मांग है। मैं सर आपके माध्यम से भारत सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि दार्जिलिंग की जो गरिमा है उसको देखते हुए ये सारे मुद्दे हमारे क्षेत्र के लिए जल्द से जल्द हो। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी माननीय सांसदों को धन्यवाद देता हूं कि बजट पे चर्चा में अभी तक अधिकतम सांसद मतलब 80 से ज़्यादा माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे। 13 घंटे 50 मिनट चर्चा हुई। ये रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्य को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिला है। मिला नहीं मिला सबको? माननीय मंत्री जी, आपको धन्यवाद इसके लिए। Thank you, Speaker, sir. I thank all the honorable members who participated in this discussion on the budget. Honorable Speaker, sir, you rightly said more than 80 members have spoken on the budget discussion. In the last few days, you've held it, even if it was late in the night, and the members' enthusiasm in talking about the budget and getting into some details actually has motivated me that the interest in this year's budget, like last year's and the previous years as well,
has been not just cursory. People have gone into the details, and therefore it gives me greater motivation to reply. And of course, as things stand, and this is subject to correction, I am also given to understand that nearly 45 members of parliament have given their written speeches. Sir, I would have actually started off with the budget all over again in terms of some very distinct features which are there in the budget. But I'm very tempted to take it off and start from the first speaker of the opposition. And that is only because, of course, I'll be answering many of the questions that he's raised, but maybe because he wanted to sound a lot more interesting about the budget, his criticism started off by saying, Amrit Kal over the next 25 years, today the people of India are facing Andhkal. Kyunki a very senior member of the House starts saying that this is not Amrit Kal, it's Andhkal, I thought we should just go over that a bit more so that members would also know what probably is running in his mind. Sir, there certainly was an Andhkal in this country. But that Andhkal was thanks entirely due to the Congress. And I list out a few things why no one of us can disagree that Andhkal that was. Start with the fact that in 1991, we had foreign exchange reserves only for 2 weeks. उससे पहले emergency का काल भी हम सब जानते हैं. So Andhkal that was. Andhkal again in 1991, when you couldn't manage your foreign exchange, you didn't know what to do. And then, because you were trying to bring in reform, you also claimed we brought the reform, whereas that was under compulsion, like one of our members, honorable members mentioned it. That was Andhkal. Again, double-digit inflation, sir, during the 10 years of UPA. I will get into some of the details a bit later also. And when we are constantly talking about inflation and the government is explaining itself as to what is being done in order to contain what today is being suffered by people all over the world, but that's no excuse. We are responding to the situation in India. Double-digit inflation during UPA 1 and 2, particularly in 2, was Andhkal indeed. And that's the Andhkal probably he's referring to. Third, coal scam. Every day there was headlines in the papers about corruption, 2G scam, Antariksh Deva scam, middlemen everywhere. Country didn't know what's happening. Every morning it was dreadful to see the paper with yet another scam. That was Andhkal, sir. And not knowing how to deal with a country after the global financial crisis, inflation touching 2 digits, and also the situation, macroeconomic fundamentals all going either udar, India became one of the fragile 5. That was Andhkal with policy paralysis. So Andhkal, if he's referring to his own period, government's period, and from the memory. Whereas what we have created today is a situation where common man feels that he's received the benefits from the government, that which was promised over the decades, and therefore entering into the next 25 years towards India at 100 would be certainly the Amritkal that all of us are referring to. And why do I say that? Jan Dhan Yojana brought in financial inclusion for all Indians. And today, I can say there are 44.58 crore accounts, and in those accounts which were made fun of, saying this is zero balance account, how can you have accounts where there is not going to be any balance? There are 1.57 lakh crores as deposits in those Jan Dhan accounts.
and Jan Dhan accounts include 55.6% women's accounts. So the coverage of man, woman, and the coverage of rural, urban, everything is taken care of when we are talking about Jan Dhan. So that is the first footstep towards moving towards financial inclusion and moving towards Amrit Kal. Sir, again, 44 unicorns have successfully been identified in this country, and they've created wealth. They've also become the new showcasing of India's talent and innovation, and this has happened between 2020 and 2021. 20 crore women were given during the pandemic 500 rupees directly by the click of a button in DBT format, and the monies went into their accounts, and therefore this again is true inclusion and inclusive development. 2,000 rupees again was also given to farmers, and that gets given every now and then, so annually 6,000 rupees for sure goes into their accounts. This is actually leading towards Amrit Kal. Swanidhi Yojana, more than 33 lakh loans amounting to 3,407 crores have also been sanctioned, and more than 29 lakh loans amounting to 2,989 crores have been disbursed, and this covers poor street vendors who otherwise wouldn't have had a chance to enter the bank to claim credit or loan. They've been covered, indeed leading towards Amrit Kal for our country. Pradhan Mantri Awas Yojana, sir, 3 crores of houses have been sanctioned, of which more than 2 crore houses have already been completed in this country. And therefore, Amrit Kal, it will be from now for all these people leading towards India at 100. Every village in India has been electrified. And therefore, talking of Andhakal was their time, whereas now you have fantastic lit villages. In every village, every house has got electricity. Jyoti reaching homes. Piped water connection through Nal Se Jal scheme has also been reaching people. MSMEs have received 13.5 lakh MSME accounts were saved due to the ECLGS. 1.5 crore workers have been saved from potential unemployment, and 1.7 billion people have been given free vaccination. If all this is not going to lead towards India at 100 and Amrit Kal, what else could? So therefore, I want to just respond to senior leader Shashi Tharoorji, truly recognize when Amrit Kal was, and what we are leading towards India at 100 is actually Amrit Kal. And in that, the budget this time has stated quite a few things which are going to be leading towards a building of modern India, a 21st century India. First of all is the PLI scheme, where 20,000 crores have been announced, and this is going to be for the thermal power plants, which can be now looking forward to reduction in carbon dioxide. I'm only naming a few, sir. You have 100 PM Gati Shakti cargo terminals, which will all be developed within the country, and this is going to help in movements of goods and services, and also increasing the exports from this country. 4 major multimodal logistic parks are also being established in this country, which again is going to be better for exporters and bring in greater logistic convenience. Urbanization, like many of the speakers have recognized, urbanization is being given high priority. Tier 2 and Tier 3 cities are all going to be ramped up for the facilities which they need. Capacity building commission is also going to help us in plan. And this is not just going to be business as usual, it's going to be a paradigm shift in the way in which we deal with building our cities. Sir, there are many more such announcements which we have made: digital education, digital university, digital banking. You're going to have district level banks which are going to function completely with digital facilities.
The central bank is also going to be issuing a digital currency, which have made an announcement. And more than that, animation, visual effects, gamings and comics in which our young are experts in. We are creating a committee which will look at possibilities of bringing in various facilities and the framework which is required so that we can be able to produce good gaming and comic through the digital and visual effects through the digital media. 5G, sir, 5G services will also generate new employment, and for that we are also providing the necessary ecosystem. So, in all the budgets, sir, drone technology, which will be of great help for the farmers, is also something which we are giving a lot of importance for. Khelo India, Fitness India, for the young are all giving high priority for the youth of this country. There are going to be 1.5 lakh post offices in the country, which will also be more than just post offices, which will have all kinds of banking service facilities. Those who have Sukanya Samriddhi account and PPF account in the post office will also be benefiting from these services. E-NAM is something about which we've spoken. Startups have been given a lot of encouragements, but particularly for startups to help in agriculture, bringing in value addition. We've taken a lot of steps towards that. So I'm not getting into every announcement that I've made in the budget, broadly indicating that we have a clear plan to take all sectors and their development in our mind and move with that intention in the next few years. So, but then one important point which we shouldn't lose sight of. This global crisis, the pandemic, has been one of the absolute rare events in the last couple of 100 years. Even the Spanish flu didn't probably get recorded for the devastation in economy that it created. I would say for India, this is probably the fourth contraction in the GDP triggered off through an international event. 72-73, India saw a contraction in our GDP purely because of the global oil crisis. 79-80, again a contraction in GDP, and this was because of the Iran-Iraq war. After that was the global financial crisis in 2008-9, again a contraction, but none of this was negative. They were all reduction, remaining in the positive territory, but reduction, substantial reduction. And 2008 and 9 also saw it because of the global financial crisis. But what we saw because of the pandemic in 2020-2021, which led to a contraction of 6.6% negative, was one of the worst ever that we could face, and we were not alone in it. All over the country, all over the world, indeed, economies suffered because of such a contraction. But what I would say, no country had any comparator. They couldn't have anything before them to compare what they could do now, what resulted now, with something else which happened before. However, in the recent memory, if we were to look at a global economic crisis, which also had an impact on Indian economy, it was the global financial crisis. I'll just like to do a comparison between what was the economy then and what was our solutions for that, and what is the economy now and what solutions we gave for this one. Sir, in a way, the global financial crisis resulted in a reduced gain because it wasn't a negative growth. It was still a small growth, but it was a constricted growth. The reduced gain in the GDP was 2.21%.
lakh crores in 2008 and 9. Compared to that, the lost GDP now is 9.57 lakh crores. So that is the extent to which we have lost in this pandemic compared to the recently, meaning a decade ago, the global financial crisis. That resulted in 2.212 lakh, whereas now the reduction was far more, it is 9.57 lakh crore. Despite, sorry? I'll tell you. So despite significant supply side disruptions, India's CPI inflation, I'm picking that up for a minute, was 6.2% in 2020-21 as compared to 9.1% in 2008-9. Look at the intensity and the scope and the depths to which Indian economy had to contract. We lost 9.57 lakh crores worth in this global financial crisis, whereas the loss earlier, which is the global financial crisis, was 2.12 lakhs crore. But the CPI inflation now, because I'm purposely bringing this, because CPI inflation is the index with which we measure how prices affect common man. It's the consumer price index. Now that contracted only 6.2 now, whereas for a smaller contraction, which was not even a negative contraction in the global financial crisis period, the inflation, the CPI was 9.1%. What does it mean? That today, in spite of this intense crisis, in spite of the reduction in the GDP to the extent of 9.57 lakh crores, the CPI is well contained and it is only 6.2%, showing that we have managed the economy much better now than it's easy to say now, than a smaller crisis of that time when the contraction was only 2.12 lakh. And that led to 9.1% inflation. The CPI was 9.1%, so it's very, very easy to constantly keep throwing at us inflation, price rise, kya kar rahe ho? Yes, I agree. There is a need for us to do more. That is why we are importing more edible oils. We are removing the restriction on pulses to be imported and so on. But with a smaller reduction in GDP, with not a negative reduction in GDP, still the inflation couldn't be controlled by the UPA government, whereas Prime Minister Modi ensured that it will not cross 6.2, whereas that was 9.1 that time. A common man is affected by CPI, sir, not the WPI. So let us not go on mincing words to constantly keep throwing it at us. You please introspect. Sir, Honorable Speaker, sir, India's current account deficit surplus. All right, sir, India's current account surplus. Current account surplus, sir. Sir, the entire treasury benches heard every comment. And as much as possible, I don't say that I was here 24/7. There were times when I had gone off, and my honorable Minister of State was here to take care of everything which is being said. So when I've come here to reply, I would request through you, sir, some patience so that they hear my answers. They may be satisfied, they may not be satisfied, but kindly hear. I know some of the members who have thrown wild allegations also have gone away. They are not here to listen to my reply, which is really disappointing. Sir, India had a current account surplus of 0.9% of GDP in 2020-21. अब की क्राइसिस के समय हमारे करंट अकाउंट सरप्लस में थी और वो भी 0.9% में थी. मगर 2008-9 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय यूपीए का करंट अकाउंट डेफिसिट में था और वो भी 2.3% डेफिसिट. So
इतना बड़ा क्राइसिस, पैंडेमिक इतना बड़ा, जीएसपी हमारे जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन इतना सिवियर, और हमसे बार बोलते हैं क्या कर रहे हैं। सीपीआई को मैनेज किया, करंट अकाउंट सरप्लस में रखा। सो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर जरा पॉजिटिव नजरिया से भी 1 मिनट देखने का मैं आंकड़ा बोल रही हूं, मगर ना हम वो सब नहीं देखेंगे। सर, अभी परसेंटेजेस के बारे में प्रेमचंद्रन जी और ऑनरेबल मेंबर्स पूछ रहे थे, इसी कंपैरिजन में परसेंटेजेस भी आपके सामने रखना चाहती। सर, 2008-9 और 2021 रियल जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज सर, सर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इंसिडेंटली 2008-9 सुनने को पसंद नहीं है तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का नाम याद रखिए। रियल जीडीपी ग्रोथ का परसेंटेज का फिगर बोल रही हूं सर, 2008-9 में 3.1% था। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2020-2021 में, जो उसका नंबर मैंने एक्चुअल नंबर बोले -6.6, हमारा एकदम नीचे गिर गया, -6.6%, वेरस तब +3.1, वो भी कम ग्रोथ में नहीं हुआ, ग्रोथ अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ, जस्ट +3.1, वही एक्चुअल नंबर्स में 1 मिनट पहले मैंने बोला। सो 3.1% कंपेयर्ड विद आज का हमारा -6.6। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ उनके समय में 2008-9 के समय में 12.6%, मगर हमारा नेगेटिव -1.4%। सर ऑलरेडी मैंने बोल चुकी हूं 2.12 लाख करोड़ का उनका रिड्यूस्ड गेन हुआ, वेरस हमारा 9.57 लाख करोड़ तक नेगेटिव गिरे, मगर सीपीआई इन्फ्लेशन 9.1% एट दैट टाइम, 6.2 इन आवर टाइम। कंपेयर करके देखो कि सीपीआई कहां था। करंट अकाउंट बैलेंस जो मैंने पहले बोला -2.3%, उनका हमारा 0.9 प्लस में था। फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 252 बिलियन उनके समय ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर, हमारा 579, नेट बोल रही हूं, टच 650 बिलियन करोड़ US dollars। FDI flows, FDI inflows उस समय 8.3 बिलियन, और हमारे समय अभी 80.1 बिलियन FDI inflows। सर 1 मिनट, हमारे परफॉर्मेंस इस पैंडेमिक के समय और ग्लोबल परफॉर्मेंस को एक बार देख लेंगे। इंडिया एस्टिमेट ही बोल रही हूं -7.3 एस्टिमेट, वो करेक्ट हो रही है अभी 2020 में -7.3%। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रोजेक्शन है, मैं सिर्फ वो नंबर ले रही हूं, करेक्ट नंबर नहीं बोल रही हूं। 2021 में जबकि हमारे प्रीवियस साल में -7.3 था परसेंटेज जीडीपी, हमारा ग्रोथ 9% है 2021 को, इस साल हम 9% में कंक्लूड करेंगे। और 2022 अभी आने वाले अप्रैल 1 से आने वाले साल के लिए 9% हमारा ग्रोथ है प्रोजेक्टेड। 2023 अगले साल के लिए 7.1% है, ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, अभी भी आने वाले साल भी और उसके अगले वाले साल में भी ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का डेटा कंपेयर करेंगे यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, -3.4 जब वी वेर -7.3, मतलब कम हिट हुआ, ज्यादा हिट उनके ऊपर नहीं हुआ। उनका 2021 का जहां हम 9% में है, वो 5.6% में। रिकवरी भी धीरे चल रही है उनका, हमारा रिकवरी अच्छा चल रही है। आने वाले साल में
22 में जहां हम 9% है वो 4% है। नहीं, कंपेयर करने के लिए क्षमता रखना चाहिए सर। जब डेटा उनके मन में जो विचार है उसके अनुसार नहीं है तो मुझे चिल्ला चिल्ला करके मेरे आवाज को दब करने के लिए कोशिश। सुनने का क्षमता मैच्योरिटी दिखता है, अगर सुनने का क्षमता नहीं है, यू नो व्हाट आई वांट टू से। सो यूएस में ग्रोथ जब -3.4 हुआ, हमारा -7.3 रहा, हम 7.1 में ग्रोथ कर रहे हैं। Oh yes, we'll correct. Don't worry, we'll do that. आदिर जी आपके नेबर है, हम क्यों भूलेंगे। सर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैंने शुरू किया बोलने के लिए, जब उनके गिरावट -3.4 में था, इस साल 5.6, आने वाले साल 4, अगले साल 2.6। उनके रिकवरी का पेस देख लीजिए, हमारे से तुलने के बाद आपको समझ में आएगा। सर यूरो एरिया, पूरे यूरो एरिया का 6.4 माइनस 5.2 इस साल, 3.9 आने वाले साल और 2.5 अगले साल। मैं इस कंपैरिजन को क्यों दिखा रही हूं? डेवलप्ड कंट्री हो, इमर्जिंग इकोनॉमी हो, हमारे जैसे एक ही मतलब साइज में छोटा इकोनॉमी नहीं बड़ा इकोनॉमी हो, इन सब का ग्रोथ और इन सब का पैंडेमिक के समय गिरावट, ये सब को कंपेयर करते हुए गिरावट हमारे बहुत ज्यादा हुआ, मगर रिकवरी भी उतना ही पेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस साल, आने वाले साल, अगले साल भी बाकी सबका रिकवरी इतने फेस में नहीं है, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे वो इमर्जिंग हो, चाहे वो छोटा इकोनॉमी हो। कंपेयर करते हुए सबसे फास्टेस्ट रिकवरी, सस्टेन्ड रिकवरी हमारा हो रही है। सो आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दैट सर। That's the point. Despite biggest form. सर, एक मिनट, अगर देश प्रगति कर रहा है तो अपन क्यों विरोध करें? सर, हम इस पिछले साल भी और इस साल भी ये पैंडेमिक का इतने अफेक्ट होने के बाद इकोनॉमी कैसे रिकवर होगा, कैसे इसको क्या क्या तरीके में से हम, हाउ डू वी रेस्टोर द इकोनॉमी, इसके ऊपर बहुत हमने चिंता सोच विचार किया। बेस्ड ऑन दैट सर, आई एम बेसिंग ऑन एन आरबीआई एस्टिमेट। आरबीआई का ये एस्टिमेट था सर, सरकार के द्वारा इफ यू स्पेंड 1 रुपी व्हाट विल बी द मल्टीप्लायर इफेक्ट, मतलब इफ यू स्पेंड 1 रुपी उससे कितना फायदा आपको मिलेगा, और उससे जितना फायदा मिलेगा उसके अनुसार आप खर्च करने में सक्षम, डिसीजन अच्छा डिसीजन लेने के लिए उपयोगी रहेगा। सो आरबीआई एस्टिमेट इज इफ यू स्पेंड 1 रुपी ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विदाउट क्रिएटिंग एसेट्स, खर्च करने के लिए पैसा अगर आप देंगे, 1 रुपया अगर खर्च करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा 45 पैसा। मतलब पूरे के पूरे 1 रुपया का 1 रुपया रिटर्न नहीं मिलेगा, आधा भी नहीं मिलेगा, आधा से कम 45 पैसा तक ही आपको मल्टीप्लायर मिलेगा। इसीलिए रेवेन्यू में खर्च करने में 45 इस साल मिलेगा, आने वाले साल में उसके कारण और 10 पैसा मिल सकता है। इन द सेंस इफ यू स्पेंड 1 रुपी, immediately this year you will get 45 paisa worth returns or multiplier,
And next year you may get an additional 10 paisa more. So it's not going to be 1 rupee for every rupee. It will not even be 50 paisa this year. So it is no point if you spend that money on revenue expenditure because the multiplier is limited. It's less than 1. RBI's estimate again says that if you spend 1 rupee on capital expenditure creating assets, the return or the multiplier effect will be 2 rupees 45 paisa even the first year. Multiplier effect will be 2 rupee 45 paisa. And additionally, the next year and the year after, another 3 rupees 14 paisa will get added to it. So, for every public taxpayers' money that we spend on capital expenditure, building assets, building public infrastructure, this year itself you will have 2.45 as multiplier, and the next year you will get 3.14 paisa, 3 rupee 14 paisa. Therefore, we thought public taxpayers' money being spent in creating assets gets us better returns, better multiplier effect, and therefore we chose to spend on capital, in infrastructure building. Okay, infrastructure building, public expenditure, we are borrowing money to do, but we are also ensuring that revenue expenditure is rationalized. I want to convey and put it on the records of this august House that revenue deficit as a percentage of GDP of the government has shown visible decline because it doesn't give you the multiplier that you want. I want to highlight and show that in 2020-22, RE is only 4.7, and 2022-23 we have put in the BE 3.8 only. Normally, anybody who's looking at budget preparations and budgets of the countries will understand it's highly difficult, very, very difficult to reduce revenue expenditure. But we have shown that without hurting much, revenue expenditure has been rationalized. I just want to put this one on record, sir. Sir, now, in a way, I will respond to members of Parliament who have raised issues on that. I'd like to give clarification or respond to the questions that members have raised. I'll first start with several members questioning the GDP growth projections. Members have said the real GDP growth rate mentioned in the budget speech and the economic survey are different. There is a mismatch. Many members said that. But I just want to say, sir, for 22-23, the projected growth in the economic survey is 8 to 8.5%. They've given a band. The economic survey gave a band of growth which is 8 to 8.5. The estimates of RBI are different. As they are doing their own projection, their estimates are slightly different. Now, with this projected growth rate, to arrive at a nominal growth rate figure, you will have to top it up with the deflator. GDP growth rate in the budget projection, sir, 22-23, was based on the advanced estimates of the NSO, which is given by the Ministry of Statistics and Program Implementation. That is a different strand, so their numbers will also be slightly different, but the trend and the number largely are in the same level, the same sort of quartile. So the difference by itself does not account for too much, except for the fact that the advanced estimates based on which we projected the figure of GDP growth in the budget was prior to the Omicron. What we have done is we've also taken the Omicron into consideration and used that figure, and therefore the budget projections are looking at 22-23 a nominal GDP of 11.1. So there is no difference
there is no much worry if the numbers are different. Economic survey takes it from one source, we take it from another. All of us use our deflators, and roughly they are about similar ranges. So the about WPI, there was a voice which was raised. Of course, that's in double digit, whereas CPI has been remaining in the range, and therefore we expect to have about a deflator of 3.5%. So that clarity I just wanted to bring to the notice of the honorable members who spoke about mismatch in the two GDP growth figures. Sir, I'll come to this topic which most members did raise as a concern, unemployment. Members quoted from the speeches and mentioned that only 60 lakh jobs are being talked about. So that was only for one of the schemes for which we said this scheme, because of this scheme, there will be about 60 lakhs. And that is the PLI scheme. So that doesn't mean that's the only scheme in which we are looking at generating employment. First principle is sir, employment generation would be a natural outcome. I'm just saying this to start with. I know members are waiting to pounce on me because I've said this line. Let's understand the context. Because just for PLI, when I said 60 lakh jobs, it was presumed, if I'm not faulted at, presumed conveniently, saying that's all is the job you're creating. Not at all. In that scheme, that's a job. In general, when we're talking of high growth, in general, we are spending on infrastructure and looking at railways, roadways, building of multimodal transport, logistic hub, inland waterways, power generation, renewable energy. These are not going to happen without jobs. Latest periodic labor force survey, which Adhirji also referred during his speech, indicates that urban unemployment rate in January to March quarter of 21-22 has declined to pre-pandemic level of 9% after peaking to 20.8% during the first wave, April-June quarter 2020-21. So employment data which is being given by the same periodic labor force survey which Adhir Ranjan Chaudhary ji mentioned, I'm telling you the figure, urban unemployment, I'm repeating here. Urban unemployment rate in January-March quarter of 21-22 has declined to pre-pandemic level of 9% after peaking at 20.8. So in November 2021, we saw a net addition in the EPFO, and their net subscription, newer, meaning net subscription makes up for those who have gone away and those who newly have come in. Net addition to EPFO subscription saw a peak at 13.9 lakh new subscribers, an increase of 109.21% over the previous year, and the highest in any given month since 2017. So that's about employment, where again, member Abdul Samad Samdani, IUML, Mr. Arif, CPIM, Dinesh Chandra Yadavji, JDU, Bhartruhari Mehtabji, BJD, and Sashi Tharoorji had spoken about unemployment. So I'm giving you some also, sorry, Farooq Abdullah ji also. Sir, reduction of Manrega. So Manrega is a demand-driven program. As and when there is demand, through the supplementary demand for grants, we give the additional required amounts, but we have not reduced from the BE compared to BE. The amount has remained same, and it is this government which, having given in the BE 64,000 crores in 2020-21, raised it to 1,11,000 crores for Manrega. So, when the demand comes, we give them the monies which is required for keeping the rural employment guarantee scheme. I just want to quote
BE 21-22, 73,000 crores. RE increased to 98,000 crores and BE again 73,000 crores. There is no reduction, and this is a demand-driven program. As and when the demand comes, we will be giving it. It's never been let down. Sir, this issue of Manrega, again, Abdul Samad Samadani, Shri N.K. Premchandran ji, Kalyan Banerjee ji, Sudeep Bandopadhyay ji, Bhartruhari Mehtab ji, Ranjit Reddy ji, Shri Muralidharan ji, Farooq Abdullah ji, Kahir Ahmed ji, M.K. Raghavan ji, and Professor Saugata Roy. Also, Sashi Tharoor ji. So all of them had raised this. The estimates which have been mentioned, sir, are always the best estimates, and they are subject to also changes as and when the demands come, which I've already said that. So there was this concern about social welfare schemes are getting reduced allocations, which is not true again. I'll just give you an indication in lakh crores. SC, BE 21-22, RE 21-22, BE 22-23. That's the sequence in which I'm reading. Scheduled caste 1.26 BE 21-22, RE 1.4, where it was 1.2 in the BE. BE 22-23, 1.42, higher than the BE of last year, higher than the RE of last year. That is about SC welfare. ST welfare, again 21-22 BE, RE, and then BE of 22-23. 0.8, 0.87, 0.89 lakh crores. Not reduced at all, on the contrary, increasing. I've explained CPI inflation. I've explained the breach of beyond 6.9, 6 points had happened only 1-2 months, not before. That I said earlier also. Even now I'm saying compare the inflations where we were talking about the double digit. And actually I should give you the figures to say, in spite of that, BE numbers were big. One character which all of us should understand of the UPA government. Every time, I wish I had that number with me. I have it for a few criteria, but I'll show it. Every time the BE will be a big number, the RE will be half of it. The next year BE will be based on the RE of last year, unachieved. Continuously. So, because I've come into that topic, I'll say this. Look at what has been spent in 2013-14 for health. UPA, 2013-14, 37,330 crores. What was actually spent? 28,662 crores. They'll put big numbers in BE but never utilize it. And then now we'll say, all right, but what about inflation? All right, what about the actual? All right, what about the RE? Keep shifting the milepost. But someone please answer from the UPA, why do you put big BEs? And end of the day, at the actual stage, you find not even half being spent. And this was health in 2013-14. Now, what have we done? BE, where it was 37,330 crores, we are doing 89,250 now, 2022-23. So, inflation, no inflation, what is the comparison, madam, sir? Again, education. Education, I'm sure quite a few of you all are very keenly interested. What was the amount in 2013-14, sir? BE, big number, BE, 1,06,201. BE, what was RE? 71,322. Will somebody ask them as to where did it go? Why did you have to put so much of an amount in BE and couldn't even spend it in RE?
Whereas what are we now saying? I'll go to the year in which the actual is available. Actual is available for 2020-2021. हम कंपेयर करेंगे हमारे BE हमारे एक्चुअल के साथ. हमारा BE क्या था? 99,311 crores. What was the actual spent? I can hear whispers of lower. Come to the actual. 84,219. 1 लाख लगा दिया, खर्च 71,000 ही हुआ. हम लगा रहे 99 मगर अचीव किए 84,000. उनके एक्चुअल से ज्यादा हमारा खर्च हो रही है. So please, I'll give you everything that you want. Actual number में कटौती है जी. Okay? Sir, like that I can go on giving numbers for every one of them. SC, ST I just mentioned, sir. So I'll come for that also. 2013-14 में scheduled tribes के लिए 24,598 BE 2013-14. No cherry picking. आप पिक करो जी चेरी. आप चेरी पिक करो. आपके रिकॉर्ड इतना खराब है, आप जितने भी चेरी पिक करो अच्छा नहीं मिलेगा. खराब है कांग्रेस वाले, खराब है कांग्रेस वाले, खराब है शेड्यूल्ड ट्राइब्स. कांग्रेस खराब है सर. शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए माननीय स्पीकर सर 24,598 BE में और एक्चुअल में 22,000 ही उपयोग में आया 2013-14 में. हम 89,265 BE में दिए. 24 कहाँ है, 89 कहाँ है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स. शेड्यूल्ड कास्ट में आएंगे 41,561 13-14 में BE. हम क्या कर रहे हैं अभी? 1,42,342 हमारा BE. So SC वेलफेयर हो, ST वेलफेयर हो, प्रश्न पूछ सकते हैं बार. Hey, what have you done for SC? What have you? Number speak, sir. चेरी पिकिंग आप भी करो. एक भी चेरी नहीं है आपके बास्केट में. सब कोयला है. 2GB है थोड़ा सा. 2GB है. 2GB है. 2GB है. कॉमनवेल्थ भी है आपके पास. करो कॉमनवेल्थ का चेरी पिकिंग. कोयला है कोयला. सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर प्रश्न पूछा गया. आई लाइक टू आंसर दैट. एंड द मेंबर्स हु आस्क्ड अबाउट दिस आर MIM's इम्तियाज